So these are the power factors for the given question. Now see what happened. So I think in the question we have, if you see the question diagram, एक वोल्टेज सोर्स है, उसकी वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 50 cos ओमेगा टी, ठीक है यहाँ तक। और एक इंडक्टर लगा हुआ है, दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक 5 ओम का है, एक जो है वो 10 ओम का है, ठीक है, और एक इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर, और इंडक्टर की वैल्यू आई थिंक गिवन नहीं है, ठीक है। अगर आगे बात करें, जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, इट इज P इन 5 ohm is equals to I square R, ठीक है यहाँ तक। सो इन द 5 ohm resistance the power consumed is I square R. How much is power? It is 10 watt, and I square is I square, and R is how much? 5. Hopefully ये बात क्लियर हो गई होगी। So 5 1 जा 5, it is 2, so I square value is 2, or we can say I is √2 एम्पियर, ठीक है यहाँ तक। अब अगर आगे बात करें तो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो हमारा कितना हो गया, अगर मैं टोटल एवरेज पावर की बात करूं तो होगा वो I स्क्वायर R, ठीक है। और हमारे पास टोटल एवरेज पावर कितनी हुई, I स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 2 है, और रेजिस्टेंस टोटल कितना हो गया, इट इज 5 एंड 10 15, सो इट इज 10 वाट, एग्री। नाउ पावर फैक्टर अगर डिफाइन करें तो पावर फैक्टर क्या होता था, cos phi इक्वल्स टू R अपॉन मॉड जेड। cos phi की एक और वैल्यू होती है, दैट इज व्हाट, इट इज P बाई S, ओके। और कोई फॉर्मूला होता है, यस, cos phi इज ऑल्सो इम्पीडेंस एंगल। तो अगर हम इन दोनों की बात करें, R तो है हमारे पास टोटल, दैट इज 15, बट मॉड जेड नहीं निकल पाएगा क्योंकि L नहीं है। तो जो हमारा पावर फैक्टर है उसको निकालने का एक और तरीका है इम्पीडेंस से भी बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि अगर इम्पीडेंस में एंगल चाहिए तो आपको L की वैल्यू चाहिए। तो पावर फैक्टर से अगर हमारी बात बनेगी तो वो है एपरेंट पावर, कैसे भी आ जाए उससे बात बन जाएगी, ठीक है यहाँ तक। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। नाउ व्हाट इज द एपरेंट पावर, लेट्स सी। एपरेंट पावर इज व्हाट, इट इज VI। इफ यू सी द मैग्नीट्यूड, V is how much, V is 50√2, and if you see the I value is √2, okay, so it is √2 cancel out, so S is 50. Now let's check the power. So if you see the power factor, then how much is your P, 10, and it is how much is your apparent power, 50, so it is 1/5, and 1/5 is what, 0.2. Is there any option? Let's see. I think option match नहीं कर रहा है हमारा। I think 50 into √2, let's check the data, 0.2, 0.4, it is 10 na, oh sorry, it is 30 na, 15 2s are 30, it is 30, so it should be 30, so it is cancel out, so 5 6, it is 0.6, it is 0.6, now check your option. So 0.6 is available, yes, we have the C option, okay. So for this question we will have C option. Now if you are seeing the numerical, then every formula is important as we have studied in your RL circuit. तो RL circuit का हर एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे लगाना है वो है डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल के डेटा पर कि कैसे हमें इसको यूज करना है। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है हमारा। See the next numerical. नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं अपने नेक्स्ट इसी टॉपिक पर। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारा है RL सर्किट, सॉरी हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है ए सीरीज RL सर्किट, ए सीरीज RL circuit within bracket R is how much
R is 4 ohm, then L is 0.01 H, 0.01 H is excited by a voltage in volt whose value is Vt is equals to 283 sine 300t plus 9 degree. It is 90 degree, sorry, 90 degree, full stop. Now the current in the circuit will be the current in the circuit will be. Now options are, तो ऑप्शन देखते हैं क्या है. ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो है हमारा 40 साइन 300t प्लस 53.1 डिग्री. ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा 40 साइन 53.1 डिग्री. इज करेक्ट और नॉट? या 53.1 डिग्री. सी ऑप्शन जो है हमारा है 40 रूट टू साइन 300t प्लस 53.1 डिग्री. एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा 40 रूट टू साइन 53.1 डिग्री 1 डिग्री. सो दीज आर योर ऑप्शंस. सो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, क्या होगा इसका आंसर. एक सीरीज सर्किट है, आरएल सीरीज सर्किट है, जिसमें आर और एल कितनी वैल्यू है, वोल्टेज सोर्स इतना है, तो करंट कितनी होगी. ठीक है, देखते हैं डायग्राम बनाकर. सो इफ यू सी द डायग्राम, एंड आर इज हाउ मच, आर इज 0.4 ohm and L is what? Now L is 0.01 ohm. Now in AC we have to represent your inductor in ohm, so it is XL. XL is what? Omega L. And how much is your omega? If you compare this with omega t, then omega is 300. So you have 300 into 0.01. Okay. So 2 zeros so 2 0 cancel out. So it is 3 ohm. Okay. So we have 4 and 3 ohm value of. Now we are having a voltage source. We are having a voltage source that's value is given to you 283 sine 300t plus 90 degree. Okay, this is your value. Now I can write as 283 upon root 2 angle 90 degree is your value in RMS. Okay, now what is the current value is what? I is B by Z in case of AC circuit. Now first we will see the Z. What is Z? Now Z is what? R plus JXL. But if you pick in the polar form, and it is R square plus XL square, phi equals to tan inverse XL by R. तो देखते हैं 3 square 9, 4 square 16, 25, that's 5. Okay, now phi equals to tan inverse how much? It is 3/4. Now अब मैं आपको कुछ और चीजें बता रहा हूं. अगर आपके पास 3 plus J4 है, तब इसका मैग्नीट्यूड होगा 5 और एंगल होगा 36.86. अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 plus J8, तब इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10, एंगल हो जाएगा 36.86. ठीक है यहाँ तक. इसको अब आप और 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 plus J16 and it is magnitude is 20 but angle is 36.86. सिमिलरली मैं आपको और कुछ बता रहा हूं जो आपको याद रखना है. एसी के केस में अगर 4 plus 3J है, कितना है? 4 plus 3J, एंड चेक करिए मैग्नीट्यूड फिर 5 होगा बट इसका एंगल होता है 56.86. ठीक है यहाँ तक. अगर फिर मैं बात करूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए. नाउ 10 एंगल 56.86. सिमिलरली 10 से 2 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 plus
J12 and answer is 20 but angle is same 58.86। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है अगर एसी में आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं इसकी बात करूं तो ये आ जाएगा 5 एंगल 36.86। ठीक है यहाँ तक। तो V तो हमें पता ही है कितना है, V देखते हैं कितना है हमारा, इट इज 283। नाउ योर ऑप्शन आर इन maximum, so don't need to apply this √2। so 280 sin 300, इसको लिख सकते हैं 280 angle, because option are in maximum value, that's why I'm using this 283 angle 90 degree upon 5 angle 36.86। okay, so just 283 divide by how much? If you divide 283 by 5, just divide that thing। so 5 283 ये है ना, हाँ ठीक है। so 283 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 जा it is 5 5 जा 25, then it is 3 and if you have 3 and 3 5 6 जा 30, then 3.06, it is 30, so it is 56.6। is there any option? No option is matching. Why? Let's see why it is not matching. Is there any misprint in voltage? Let's see. Voltage is misprint, I think. So let's see the voltage. Voltage is what? 283 sin 300t plus 90 degree, बिल्कुल करेक्ट है। और ये वैल्यू 5 ही आएगी, 536। now let's see the value, what could be your answer? okay, let's see, it is 280 by 3, okay, √2, then it is 56 upon √2। if you have 56 upon √2, not, it is not correct, so let me check your option or data is something where something is misprint in the question. Let's check the data first. I will check its data and then I will give you the correct answer. Let me check the data first. If you check this, our answer are correct. So I think we have written 56.6. now if you multiply with 40 √2, because 40 is wrong, this 40 is also wrong. if you check 40 into √2, then 40 into 1.414, if you calculate, it is 56.6. so your answer are correct, but they are given in terms of root, but we are calculating our answer in terms of point. so our answer is correct. so we have either C option or D. now confirm what is our answer. so if you see, voltage is in terms of 300t, so current should be in terms of 300t. so let's check. I is equals to 56.6 sin 300t and this angle is minus, so 90 में से अगर हम ये एंगल माइनस कर लें, then it is what? 36.86, then it is what? 4, then it is 9 minus 8, it is 1, then it is what? 9,963, then how much is here? It is 85, so it is 53 point something. okay, so it is 53.1. okay, so 53.1 is here also, but here the frequency is not given. so option C is correct. because we are calculating the value in terms of 56.6, but they are not given, they are given in terms of 40 √2। so 40 √2 और जो 56.6 है, ये exact meaning same value है, if you multiply you will get same answer। so start करते हैं next problem देखते हैं क्या है। देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो क्या है।
So our next problem is, now see the next problem of your circuit is, now next problem is in the given circuit, in the given circuit, in the given circuit, the voltage VL, the voltage VL has a phase angle, has a phase angle of, fill in the blanks, with respect to, ठीक है. So our diagram is, there is no option. Diagram is this, it is Vs, and then we have, just change the marker, they are not working properly. So our resistance is 17.32 ohm, and then we have VL, it is VL, and the inductance value is given to 10. So this is our question. In the given circuit, the voltage VL has a phase angle of this, so we have to calculate. Now what could be the answer? Let's see. So first, if I draw the impedance triangle, then that is Z is equals to R plus JX. Okay, so 17.32, let's check, it is 17.32 whole square plus 10 ka square, and if you see the angle is tan inverse 10 upon 17.32. okay, is it correct? Yes, we are doing correct, but tan inverse 10 upon 17.32, what could be its value? So let's check. Now if you have the impedance triangle like that, it is R, it is X, then it is Z. Now if I multiply on both sides, then it is VIY, and it is VX, that is VX, and it is equals to V. If I multiply all the things, okay, then what they are asking for? They are asking for what? Now this angle is 90 degree. So they are fine. They want to try this angle also, either this or this. Okay. So let's check what is the answer. So to have this thing, we have to take 17.32. I can write like tan inverse 10, and 17.32. अगर हम देखें इसको कैसे आएगा? It is 10 multiplied by 1.732 ना. So it is 17.32, and this is tan root 3. Okay, it is tan root 3 na, so I can write like that, it is tan root 3. So 10 to 10 cancel out. Okay, so it is tan inverse 1 upon root 3. ठीक है यहाँ तक. अब अगर tan मुझे चाहिए 1 upon root 3 किसकी वैल्यू होती है, तो चेक करते हैं. sin थीटा अपॉन cos थीटा जो होता है वो होता है tan थीटा. तो tan, अगर मैं 30 की वैल्यू चेक करूं, तो tan 30 की वैल्यू चेक करने के लिए मुझे sin 30 चाहिए. तो tan 30 की अगर मुझे वैल्यू चाहिए, तो sin 30, और sin में जो होता है, वेट, sin 30 जो होगा, sin 0 is 1, so it is 0.5, so it is sin 30 and cos 30, and cos 30 root 2 by 2. Let's see what is this. So 1 by 2 root 3 by 2. Yes, we are getting 1 upon root 3. So it is tan 30. Okay, so we have tan 30. Okay, so phi is what? 30. Okay, so we are having this angle 30. Okay,
Now in a triangle the total angle is what? 180, 90, 30. It is 120, and so this should be 60. So this should be 60. Okay, so our answer is 60 degree because in the given figure the voltage VL has a phase angle with respect to the supply voltage, then it is having how much degree? 60 degree answer. So now we will take the next numerical. तो अपना अभी तक हमने 4 से 5 numerical कर लिए हैं. अब इसके बाद हम और numerical देखते हैं RL सर्किट पर. So start करते हैं अपना next numerical. So we have the answer of this question is 60 degree. Okay, if they are asking question for the angle between the supply voltage and VR, that is 30 degree. If they are asking the angle between the VR and Vx, that is inductive voltage, that is 90 degree. But they are asking the angle between the inductive voltage and the supply, so answer is 60 degree. So this is your answer, 60 degree. Okay, so now next problem is what? Let's see the next problem. So next problem देखते हैं क्या है हमारी. आई होप सो आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही होंगी. ए रेजिस्टेंस एंड अनदर सर्किट एलिमेंट, ए रेजिस्टेंस एंड अनदर circuit element, resistance and another circuit element are connected in series across a DC voltage. Across a DC voltage V. Full stop. The voltage across the element. The voltage across the element is zero. After some time. The other element is pure. The other element is pure. ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन जो है वो है कैपेसिटेंस. It is capacitance. And the next option is both A and C. C option जो है वो है आपका resistance. और लास्ट जो ऑप्शन है वो आपका है इंडक्टेंस. लास्ट जो ऑप्शन है वो आपका इंडक्टेंस. देखते हैं क्या होगा इसका आंसर. So resistance and another circuit element are connected in series across a DC voltage source. So यहाँ पर एक इन्होंने DC सोर्स लिया हुआ है और उसके साथ एक रेजिस्टेंस है और उसके साथ एक कोई एलिमेंट लिया है. लेट दिस एलिमेंट इज X. अभी पता नहीं है एलिमेंट कौन है. ना बट जो DC सोर्स है, ये तो जाहिर सी बात है कि जो DC सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 0 हर्ट्ज होगी. ये R है. तो वो क्या क्वेश्चन में कह रहा है, रेजिस्टेंस और एक अनदर सर्किल एलिमेंट जो है सीरीज में कनेक्ट है. कुछ समय बाद ये देखा जाता है कि उस एलिमेंट के पास वोल्टेज 0 हो जाता है. तो हम ऑप्शन वाइज चलते हैं, जो ज्यादा बेहतर रहेगा. अगर हम C लेते हैं तो XC is 1/ωc. अगर मैं यहाँ पर कैप्स लूं तो फ्रीक्वेंसी 0 और फ्रीक्वेंसी 0 का मतलब ये इनफाइनाइट. तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा? देन एलिमेंट शुड बी ओपन सर्किट. क्लियर? क्योंकि ये तो ओपन हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है. तो हमारा ए ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि यहां पर जो कह रहा है जो वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट इज 0. और वोल्टेज कब 0 होता है?
वोल्टेज जीरो होता है शॉर्ट में, वोल्टेज इज जीरो, वोल्टेज इज जीरो इन शॉर्ट सर्किट, इन शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है यहां तक। और ये तो ओपन हो रहा है, तो ओपन में तो सारा का सारा वोल्टेज यहीं आ जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन चेक करते हैं, बी तो अभी नहीं चेक हो पाएगा, हम करते हैं सी, सी ऑप्शन चेक करते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो वोल्टेज आता है, इफ इट इज आर, इफ इट इज आर देन वोल्टेज इज हाफ, वोल्टेज इज हाफ, बट यहां तो जीरो कह रहा है, ये भी गलत है। तो ए और सी तो डेफिनेटली नहीं होंगे, ए नहीं होगा और ए और सी वाला नहीं होगा, और सी तो है ही नहीं क्योंकि ए कट गया हमारा, सी कट गया, बट जो बी है उसमें ए और सी का मिक्सचर है, तो ये दोनों तो है नहीं, तो ये कट गया, डेफिनेटली बात यही होगा। अब ये कैसे होगा वो और मैं कंफर्म कर देता, होगा तो यही आंसर, बट कैसे होगा उसको एक बार देख लीजिए, देखिएगा बी। अगर ये एलिमेंट इंडक्टर है क्या है ये बी, हम डी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं इसका। अगर ये एलिमेंट इंडक्टर है तो देखिए एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल और इट इज 2 पाई एफ एल। फ्रीक्वेंसी कितनी है सोर्स की, जीरो, बिकॉज ये डीसी है और ये जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा शॉर्ट। अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तभी तो ये डायग्राम बनेगा, ये हो गया शॉर्ट, ये भी हो गया शॉर्ट, इट इज वी, इट इज आर, ठीक है। तो पूरा का जो पूरा वोल्टेज है वो इसके पास आ जाएगा, जो वी आर होगा। अगर आपने जब मैंने सीरीज सर्किट पढ़ाया था, जब केवीएल लगा के, केवीएल मैंने बताया था, केवीएल सर्किट में वोल्टेज डिवीजन, एक एलिमेंट शॉर्ट हो जाता है, एक एलिमेंट ओपन हो जाता है। जब शॉर्ट हो जाता है तो उसके पास वोल्टेज जीरो हो जाता है, बट ओपन हो जाता है तो उसके पास इनफाइनाइट वोल्टेज, अगर आपको याद हो रहा हो। तो यहाँ जो वी आर होगा वो तो कितना हो जाएगा वी, और ये जो वीएल होगा वो तो जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज आई जो वीएल होगा वो क्या होगा आई इंटू एक्सएल, बट एक्सएल तो कितना हो गया जीरो, तो और वोल्टेज जीरो का मतलब क्या होता है शॉर्ट। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, डी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपके। देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इससे रिलेटेड क्या है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in an RL circuit, in an RL series circuit, in an RL series circuit, in an RL series circuit, R is 20 ohm and L is what? L is 0.056 Henry, and the supply frequency is 50 Hertz. 50 Hertz. The magnitude of the impedance circuit will be the magnitude of circuit impedance will be, the magnitude of the circuit impedance will be, ऑप्शन है आपके, पहला जो ऑप्शन है वो है 26.64 ओम, अगला जो ऑप्शन है वो है आपका 20 ओम, सी जो ऑप्शन है वो है आपका 37.6 ओम, और डी जो ऑप्शन है वो है 20.056 ओम। यहां पर हमें डिफरेंशिएट करने में बड़ी दिक्कत होगी अगर हम अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट लेंगे तब। देखते हैं क्या आता है भाई रिजल्ट, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सॉल्यूशन अगर बात करें तो हमारा z बराबर होता है r प्लस जे एक्सएल, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है तो हमारा आंसर होना चाहिए आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी तो r कितना है 20 का स्क्वायर, और एक्सएल जो होता है यहाँ पे सॉल्व करते हैं 2 पाई एफ एल। तो 2 पाई एफ एल अगर बात करूं तो 2 इंटू 3.14 इंटू एफ इज 50,
इंटू एल इज हाउ मच 0.056. सो ये तो मुझे गुणा करनी पड़ेगी. लेट्स टेक द प्रोडक्ट ऑफ दिस थिंग. अगर हम इसकी बात करें तो हमारी जो प्रोडक्ट आ रही है, लेट्स सी द प्रोडक्ट. 2 it is 2 into 3.14 into 50 into 0.056. So it is comes out to 17.58. 17.58. So let's take 17.58 square. So it is 2 into 3.14. It is 0.056 now. Yeah. So it is multiplied by 17.58. Okay. So it is 309 plus it is 20 square 400. So its magnitude is 709.12. So if you take approximation, if it comes out to be if it is 400, then it is 20. Okay. If it's just more than 400, then it is 20.506. So these are the wrong answer. These are the wrong answer. Okay. क्लियर है. अब अगर हम आगे बात करें, अगर ये 25 है तो 25 कितना होता है, चेक कर लीजिए. 25 टू 12 और ये 2 पंजे 10 होते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5. तो इट इज 5 to 6 to 5. अगर ये 625 के ऊपर होगा तो ये 26.4 होगा. और अगर ये 40 है तो 40 1600. 40 का मतलब हो गया 1600. ठीक है. सो आई होप सो दिस योर आंसर इज करेक्ट, बिकॉज